Hi everyone. Today I have with me another relatively accomplished Pakistani student who's in the States right now. Ali. Ali graduated from LUMS in 2021 और उसके बाद right now he is in Perdue University in the state of Indiana in US, and he's doing his masters in UX और मतलब degree का Yeah. नाम क्या है? You can correct me. Computer graphics technology with the UX specialization. Seems fancy, but yeah, Computer it sounds graphics simple. technology with UX Yeah. specialization fit है. तो right now हम असल में बात करेंगे कि the fun fact about Ali is that Ali got a fully funded opportunity in the US to study, and for someone like me who has gone through the whole graduate process, हम सबको पता है कि apart from Fulbright and apart from USEFP इतना आसान नहीं होता to get a fully funded opportunity. So Ali, why not you share your thoda sa background or journey so far? Like, how did you get here? Like, Perfect. For starters, this was one of the best introductions that I've ever gotten. So thank you so much for that. okay. उसके अलावा, yeah, Shayar bhai, thank you so much for having me. Um, तो जैसे कि आपने बताया, I had like an undergraduate from LUMS with a computer science degree. और उसके बाद I just hopped on to my graduate program at Purdue. So to answer your question, yeah, it was tough to get a fully funded opportunity, but it wasn't impossible. So that's what I say to a lot of people. A lot of people have reached out to me saying, um, if I could help them. So I thought that you have this podcast. Nahin, Jackie, that's super cool, yeah. Because yeah. like, to be honest, a lot of people who go out of the Mm. country relatively, the फिर वो a lot like हर कोई willing नहीं होता to share their journey or to share where they Yeah. are right now. So I Yeah. really But appreciate it's really important to take as many people along as you can, because like that's the community spirit. So yeah. it. Yeah. उसके अलावा बस फिर uh, I applied to a few places. The thing that I had in mind was कि एक graduate assistantship का a senior at Purdue had told me कि graduate assistantships होती हैं. तो there are some schools in the US जो कि इन assistantships पे आपका tuition waive कर देती हैं. तो इस तरह की I Oh, made a okay. list. Yeah. Okay. Sorry. तो इस तरह की I made a list of all of the colleges that completely waive their tuition based on if you got a graduate assistantship. So, keeping in mind that a graduate assistantship is not the only way of funding your graduate degree. एक fellowship भी होती है, but those are super rare. For a fellowship, you need to be like super accomplished, and there must be other factors, obviously. But it's like the people that have fellowships were either the top from their batches or from their program that got. A few of my friends have um, fellowships, but they were like top of CS or something, right? So that's one thing. So a fellowship is one thing, and then you have a graduate assistantship. So what I have is a graduate RA-ship. So I'm a research assistant for a professor on campus. So that's how I was able to fund my first year on campus. So You also get. Sorry, go for it. yeah, just a follow up question. So Mhm. आपका एक कॉन्ट्रैक्ट है विद द यूनिवर्सिटी वेयर Yeah, इंस्टेड ऑफ पेइंग यू टू वर्क एज एन आरए वो आपका ट्यूशन वेवर में कन्वर्ट हो जाता है या इस तरह का कोई yeah, सीन है? and I get a stipend as well. So I अच्छा. yeah, exactly. So इस तरह से है कि yes, they waive your tuition completely. So your department, it's not like कि वो cancel कर देते हैं कि अच्छा ठीक है आपकी $14,000-15,000 है वो आपकी cut हो गई, नहीं. The department pays that amount for you because they've hired you as a graduate research assistant, right? So they pay Okay. that amount for you. On top of that, they give you a monthly allowance as well. Plus that monthly allowance is enough to cover all of your expenses. So I live on campus, I pay rent, I have like I do groceries, I cook, I eat out, but it's like it's good. I don't have a problem with anything. So I don't really have to ask my dad for money as I did that in my undergraduate degree. So सही. right now it's like yeah, I'm sort of getting like independence and a sense of stability Yeah, as well. it's really important, especially at Yeah. graduate level, because agar aap, like I work as a delivery person here, and I do other gigs as well. I write freelance, I teach, I do Mm, a couple of things. But to work up along with your graduate studies, और अगर आपको यूनिवर्सिटी में चांस मिल जाए, sorry, तो yeah. भाई काफी फिट सीन हो जाता है. बट लाइक डू दे हैव एन ईयरली कॉन्ट्रैक्ट कि थ्रू आउट योर डिग्री आपको इतने साल करने हैं विद देम, समथिंग लाइक दैट? So it depends. It really depends from professor to professor as well as your department. So again, ये मैं कह दूं कि ये जो सारी assistantship है वो दोनों PhDs और masters students को मिलती हैं. ओके. But if you're a PhD, they guarantee you funding for like 3 years, 4 years, 5 years, or the duration of your PhD.
I won't be able to comment on that, but my PhD peers would be better in a better position to सही do that. सही But speaking from master's perspective, तो उसमें इस तरह से होता है कि प्रोफेसर कंप्लीटली प्रोफेसर के ऊपर है. तो यू जस्ट आई व्हाट आई डिड वाज आई कैन जस्ट completely talk about that. So I'll be as transparent as I can. So I just approached as soon as I got into Purdue, I knew that this option existed. So what I did was अच्छा सो I जस्ट Mhm. एक सेकंड आपका पर्ड्यू पहले एडमिशन हो गया था जब Yes, एडमिशन हुआ देन यू वर टेक्निकली ऑन सेल्फ फाइनेंस ऑन पेपर yes, एडमिशन के exactly, बाद यू वर्कड आउट अराउंड के यार व्हाट एल्स हाउ कैन आई लाइक फंड माय मास्टर्स राइट देन यू रीच्ड आउट exactly, टू प्रोफेसर पाकिस्तान में exactly. होते ही you emailed them cold emailed them or something like that right Mhm. सही Sorry, I should have been clearer about that. नहीं नहीं Yeah. it's just I'm just like for the audience मैं मतलब like Yeah. you can say whatever you तो want हम एक काम करते हैं बिल्कुल शुरू से. Yeah. तो I the admission start Purdue had like a rolling admissions thing going on. तो rolling meaning कि आप कभी भी एक set deadline से पहले apply कर दो. Majority of the schools have their deadlines in December or February, January. Purdue यूएस की had a थोड़ी अर्ली rolling होती thing. हैं हाँ, Purdue had a rolling thing till April शायद. अच्छी खासी extended थी उनकी deadlines. तो फिर मैंने उससे पहले पहले मैंने शायद बस रैप कर रहा था मैं सब कुछ. तो जनवरी के एंड में I just applied to every other place that I was applying to. So again, speaking from that perspective, I like applied to 4 to 5 places, a couple in Europe, a couple in the US, and yeah. But I did something that was not normal, right? It wasn't the norm. A lot of my friends, उन्होंने 10-12 जगह 15 जगह to increase their possibilities because chances I of had other getting factors in जी place because application fees वगैरह and I हाँ don't know. I that didn't is really want to. yeah Yeah. that is something I went through as well like Yeah. just not to cut you off but मैंने कोई अच्छे खासे पैसे दिए यूएस और यूरोपियन यूनिवर्सिटीज को Exactly. एंड आयरॉनिकली जहाँ पे मैं अभी हूँ इधर के लिए मैंने एप्लीकेशन फ़ी नहीं दी थी इधर मैंने तब उनको फ़ी दी जब मेरा मेरा यहाँ आने का सीन हो गया था सो लाइक या जस्ट फॉर Exactly. इंफॉर्मेशन हाँ नेदरलैंड्स में यू अप्लाई फ्री ऑफ कॉस्ट एवरीवेयर यू Mhm. वांट टू and then eventually when you decide on a university then they ask you for like 100 euros या जो भी Okay. तो application वो fees जो होती फीस है होती है आप यूनिवर्सिटी को पे करते हो, something of that sort, हाँ right? प्रोसेसिंग फी Okay. होती है and something like that yeah Okay, that's but interesting. yes Yeah. यूएस का So, तो ये सीन है हाँ, तो I like अच्छी खासी फीस होती हैं, तो just keep it just depends from person to person कि आपके कौन से factors in place हैं. तो majority of my friends took a gap year to like earn and then they applied to 15 places. So a lot of factors. But yeah, long story short, फिर I applied. I got an admission. I was one of the lucky ones. And then I was like, I know that this opportunity is available, so why not start reaching out to professors? So I cold emailed like around 50 professors from any oh department that I could find. I went like, oh okay, I am. So it's not easy, right? Getting a fully yeah funded thing it's is not easy especially when you're sitting मतलब when you're in Pakistan exactly, and when you're yeah, from that part of the world और यहाँ पे आप मतलब इनको cold email करो तो I get it like yeah, how hard it can be exactly. So I just emailed a lot of professors, and some of them reached out. They were like, okay, because I'm a hobbyist photographer and filmmaker as well. So I emailed a lot of filmmakers and photographers as professors. So they have. So this is the best part of US के इधर जो schools होते हैं वो सिर्फ एकदम purely जैसे हमारा देसी वो है स्टिग्मा कि भाई sciences इस तरह से ये चीजें. तो that's इधर there's true you would have experienced that as well, right, on campus. हाँ इधर बहुत ज़्यादा diverse है. तो जो मेरे professors दूसरे arts and design के schools हैं वो they're not it's like totally arts, right? Animation वगैरह चल रहा है उधर, art हो रहा है, तो वो photography के courses classes. तो उनको मैंने email की, they were like, yeah, your profile is really interesting, लेकिन हम department के बाहर नहीं hire करते. तो उस तरह से okay थोड़े filter हो गए. फिर मैंने अगले department के अंदर emails किए. I'm in the Polytechnic Institute, तो the graphics अच्छा programming से लेके it's like it has the entire pipeline. तो उधर प्रोग्रामिंग भी होती है और उधर बिल्कुल एनिमेशन फ्रंट एंड वाली चीजें भी होती हैं. so it's It's like basically a mix of engineering and graphic arts exactly. and मतलब ये pure engineering नहीं है right like science and Nice. engineering नहीं है Yeah. ये So there's a Purdue ECE, Electrical and Computer Engineering, which is like one of the best engineering schools in the world, to fourth position पे. तो एक ECE सही है school है, फिर एक computer science का school है, फिर एक polytechnic school है. So it's like सही Purdue has separate schools for everything. अब polytechnic में जो है वो इस तरह की चीजें हो रही हैं जो कि entirely programming नहीं है, जिनके साथ visual arts भी थोड़ा सा incorporated है. So you okay can be a makes graphics sense programmer जैसे Unity, VR, जैसे मैं VR भी आजकल थोड़ा बहुत कर रहा हूँ उसमें. So VR development भी है. We're sort of building a metaverse for our classroom, which is very cool. oh that's cool यार Yeah, मतलब they gave me a like headset, so I have like I oh play around okay with the that's Oculus. Yeah. like I want to talk about that as well but पहले Yeah. चलो let's complete your journey from Uh-huh. from Karachi to Purdue और उसके बाद Okay. फिर आगे चलते हैं Sure.
तो फिर उसके बाद बस I applied, emailed lots of professors, and long story short, फिर this professor that I'm currently hiring for didn't reply back. But I was like, I sort of know his profile on the Perdue page, and it was उधर एक option था कि request office hours. So I just did it, and I was like, okay. एक रात पहले वो इफ्तारी का टाइम हो रहा था लाहौर में. I was on campus. तो उधर मैं बैठा हुआ था इफ्तारी के टाइम पे, and I was like, यार email आई है 15 मिनट में, should I or should I not? I was confused. Would that seem weird if I just hopped on to his office hours? I was like, chalo, doesn't hurt. And then I hopped on, and he seemed pretty excited. He had gone through my resume, my portfolio, हर चीज उसको पता थी मेरे बारे में. There's this white dude really interested in my work. I was like, whoa. And then सही. we had a really nice conversation, and then he was like, yeah, I'll follow up within a week. It wasn't an interview. He knew me inside out because of everything that I shared with him. And then next week he goes like, yeah, cool. So it's like, I'll send you a contract. I'm like, whoa, this is happening. And then I get a contract. उसमें लिखा हुआ था कि ठीक है, ये graduate assistantship है आपकी, और इस पे ये इस तरह का पैकेज है, ये चीजें हैं. तो मुझे वो पता थी क्योंकि I had read about the Purdue assistantship guidelines. तो उसमें फिर तो ट्यूशन रिमिशन मिलता है आपको, और उसके साथ साथ आपको फिर स्टाइपेंड मिलता है मंथली, एंड इट जस्ट वेरीज फ्रॉम डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट. देयर इज नॉट अ सेट अमाउंट कि आपको कितना स्टाइपेंड मिलेगा. दैट डिपेंड्स ऑन योर प्रोफेसर, दैट डिपेंड्स ऑन योर व्हाट शुड आई से डिपार्टमेंट एज वेल. तो जो बेयर मिनिमम है उसमें भी सारे कुछ एक्सपेंसेस कवर हो जाते हैं. तो द ग्रेजुएट असिस्टेंटशिप इज अ रियली गुड अपॉर्चुनिटी. So उसमें टीए right शिफ्ट भी होती now, है, आर शिफ्ट भी है. right now, like आपका ये सीन है कि like you get paid every month, यस, और उसके अलावा आपका जो ट्यूशन वेवर है वो इस तरह कॉन्ट्रैक्चुअली बिल्डअप हुआ हुआ है कि आपको लाइक अपनी जेब से ट्यूशन के पैसे नहीं देने पड़ेंगे, राइट? लाइक एग्जैक्टली. फ्रॉम व्हाट आई गेट. या, सही सही सही. सो योर हेयर कितना लंबा प्रोग्राम है? 2 years. 2 years. So you will graduate around August 2023 या No, June? May 2023. May 2023. सही है सही है सही है. नहीं, हाउ Yeah, कम नहीं, अच्छा अगस्त 2021 स्टार्ट हुआ था. August 2021. अच्छा Yes, हाँ, August, सही है September. सही है सही है सही है सही है सही है सही है. I think I will graduate around that time. It No, might be December nice. 2023 for me क्योंकि internship होगी, but खैर sorry, that's irrelevant. सही है. So you're at Purdue right now. Mhm. You're doing this, and naturally you don't have to work any odd job, right? Because you're getting a fairly good No, stipend, I or you're can't. I'm thinking not of allowed to. I'm not allowed to work off because campus. of the contract. Because Yes. आपके 20 So घंटे उधर ही पूरे यूएस में कितने घंटे? exactly. 20 है, राइट? 20 घंटे, 20-hour contract. Yes. यहाँ पे 16 आवर्स होता है, तो वहाँ Uh, पे 20 आवर्स है. तो आप इधर जब 20 घंटे काम कर रहे हो, you're not allowed to work elsewhere. तो no. सही सही है. 20 hours on campus. एंड As राइट नाउ सिंस मतलब खैर यूएस में तो खैर कंप्लीटली वो पैंडेमिक वूज तो खत्म हो गए हैं, बट लाइक उस तरह का क्या सीन है? क्लासेस ऑनलाइन है, क्लासेस इन पर्सन है, हाउ इज नहीं, दैट? सब कुछ इन पर्सन. अभी तो एवरीथिंग इज इन सीटीसी की पर्सन. गाइडलाइंस और पर्डू की इस तरह से मास्क मैंडेट भी आहिस्ता आहिस्ता, आउटडोर तो पहले से नहीं था. यू वर अलाउड टू लाइक नॉट वेयर योर मास्क आउटसाइड. और अभी इंडोर स्पेसेस में भी रिक्रिएशन फैसिलिटीज जो हैं तो उधर भी खत्म कर दिया मास्क इस फ्राइडे से. इनफैक्ट 2 दिन पहले इन्होंने फ्राइडे से इंडोर स्पेसेस में तो indoor basketball, whatever, right? Every recreational अच्छा, activity that you can think of. वो सब यहाँ पे खैर मास्क मैंडेट तो अभी तक है, लेकिन यहाँ पे भी लोग उन्होंने लाइक पहले कैप्स लगे हुए थे इन पर्सन क्लासेस के, लेकिन अब तो मतलब 500 लोग भी इन पर्सन, तो आहिस्ता आहिस्ता खैर वो तो खत्म हो रहा है. बट कमिंग ऑन टू योर यूनिवर्सिटी सिलेक्शन, पर्डू के अलावा, फॉर दोज हु आर वाचिंग, if someone मतलब like would you have experience with Europe क्योंकि you applied to a lot of places, right? Yeah. So like would you share कि यार यूरोप में अगर आपको यही फील्ड परस्यू करनी है या नॉर्थ अमेरिका में कनाडा वाली साइड पे फील्ड, so how should someone go about it? Like Yeah, if you okay. have any That is a experience with very nice regards to question. Europe. That's a nice question. तो यूरोप में काफी प्रोग्राम्स हैं और बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, नेदरलैंड्स में भी. और कहाँ थी मुझे याद नहीं है. मुझे नाम सही से नहीं याद because it's been like a year and a half since I did all this. लेकिन एक EIT डिजिटल प्रोग्राम है, वो काफी अच्छा है. तो EIT डिजिटल Erasmus टाइप की चीज ही है, where it's like the first year you are at a different institute and at the second year, sorry, you are at a different institute. और हाँ, उधर वो जो थी Erasmus जिस तरह Erasmus होता है, right? exactly, तो ये EIT डिजिटल है. लेकिन Erasmus शायद गवर्नमेंट थी, ये शायद प्राइवेट इंस्टीट्यूट है. तो कह हाँ, रहा फ्रेंड Erasmus को तो EU फंड करता है. That's true. एग्जैक्टली. तो अब EIT में इस तरह होता है कि उधर स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज होती हैं. तो अच्छा. EIT में 25, 50, 100 और 75 and 100%. तो अब आई Oh, अप्लाई टू okay. EIT एज वेल. या तो उधर बहुत मजेदार प्रोग्राम है उनका. HCI for D है, वो बहुत मजेदार फील्ड भी है. वो ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन फॉर द डेवलपिंग वर्ल्ड.
and how So does is HCI it fit into related the to, duality? like, I have no idea Mhm. about the technicalities of it, but is Yeah. it closer to AI, like in that sense? AR, sorry? AI, like artificial intelligence? AI. Yeah. They have a separate AI field, ML and AI field, but this is majorly about how human beings interact with computers and the problems they face and how to just improve that interaction between a human being and a computer. So that could just Okay. range from a daily solutions, koi mobile applications which is just UX and interaction design, or other solutions, for example solving problems for people with dyslexia, and how can we Sure, use a that's computerized solution, or whatever, could be a service, could be a product, could sahi. be anything. Sahi. So That sounds just really to cool, bridge a yaar. barrier between human beings facing problems. So यही बात होती है कि the entire philosophy behind HCI and UX is being customer centric, being human centric. तो नहीं, इंसान को जो problems हैं वो हम हमारी किस तरह से टेक्नोलॉजी के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं. that's Yeah. super cool, yaar. Like Yeah. these countries, especially Western Europe, के पास तो खैर पैसा इतना है, to Western Europe, North America. Like I know someone here, जहाँ मैं होता हूँ, University of Mhm. Groningen में, he's doing his masters in computational linguistics. Erasmus Oh. scholar है वो. यहाँ पे 4 Oh, Erasmus nice. scholars हैं जिनको मैं जानता हूँ. उनका फर्स्ट लेग इधर ग्रोनिंगन में है और सेकंड उसका आई थिंक उपसाला स्वीडन में होगा. तो Ah. उसके 2 सेमेस्टर्स यहाँ हैं, 2 सेमेस्टर्स वहाँ हैं. और उपसाला यूनिवर्सिटी आई गेस. एंड वो उसकी कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स टेक्निकली यहाँ पे फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के अंदर आता है, क्योंकि Hmm. इट्स नॉट फैकल्टी ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग. सो दैट्स आल्सो Hmm. वेरी इंपॉर्टेंट कि ये इस तरह की फील्ड्स अब इंजीनियरिंग के डोमेन से बाहर निकल रही है ना, जैसे यू टोल्ड अस के Hmm. ग्राफिक्स और जो आप कर रहे हो वो भी टेक्निकली फैकल्टी ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग नहीं है. लाइक Exactly. मतलब Hmm. वो फिर वो कंप्यूटेशनल वाली और कंप्यूटर साइंस वाली टाइप पे चला Hmm. जाता है. बट वन मोर थिंग, व्हाट लाइक अब तो आप ग्रेजुएट हो गए, सो आई कैन आस्क यू दिस, बट Yeah. लम्स कितना इम्पोर्टेंट था इस जर्नी के अंदर, रीचिंग आउट टू प्रोफेसर्स, अप्लाइंग फॉर Hmm. दिस, बिल्डिंग योर Hmm. ओन पोर्टफोलियो, फ्रीलांसिंग एंड एवरीथिंग. तो इसमें Hmm. लम्स कितना इम्पोर्टेंट था, लाइक वेयर वुड यू रेट Um, लम्स? again, very important, a really interesting question as well. What I'd say is that it really depends on your mindset. So I'd say lums played a huge part in this, क्योंकि lums मेरे भी एक personal philosophy भी यही है कि आप अपने जो अपने आप को mindset जो restrict कर देते हैं ना, even if you're good, एक इस तरह से इंसान की psychology है कि people tend to just restrict themselves कि अच्छा ये तो मेरे हुदूद लिमिट्स से बाहर की चीज है, तो आई कांट रियली डू दैट. बट व्हाट लम्स हेल्प मी विद इज के लम्स में रह के आई वाज सराउंडेड बाय पीपल दैट वर रियली स्ट्राइविंग. अब हर बंदा, वेदर दे वर एनओपी स्कॉलर्स और वेदर दे वर फ्रॉम whatever background, right, हमें नहीं पता था कौन किस बैकग्राउंड से, we were just mingling together and everyone was just striving to be the best possible version of themselves. तो ये चीज बड़ी काम की थी. तो लम्स की एक ये चीज जो कि उस लम्स में बंदा अपने आप को पुश कर ही रहा होता है. कमिंग फ्रॉम अ कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड, हम हर वक्त काम ही असाइनमेंट्स, तो वो जो हार्ड वर्क था वो डेफिनेटली पेड ऑफ. तो लम्स डेफिनेटली डिड प्ले एन इम्पोर्टेंट पार्ट. प्लस द प्रोफेसर्स, उनकी जिस तरह से है सारी उनका काम, तो लम्स में जो काम ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन से मैंने डिस्कवर ना किया होता, क्योंकि पाकिस्तानी इंस्टीट्यूट जो हैं उधर HCI UX वगैरह पे इतना काम नहीं हो रहा. So LUMS is the only institute जिसे Dr. Suleiman Shahid जो होते हैं. So he has like HCI courses and he is a proponent of designing solutions for everyone, right? So वो चीज, and तो LUMS की ही वजह से I sort of figured out कि अच्छा ये एक field है HCI और उसमें एक UX field है जिसमें, I mean there's this all of this going on. So I was like, yeah. So yeah, to answer your question, LUMS did play a very major role in all of this. But like for someone who is currently in his bachelor's और वो Hmm. UI और UX और HCI में जाना चाहता है, उसके लिए Hmm. कोई स्पेसिफिक प्रीरेक्स होंगे, मतलब सिर्फ कंप्यूटर साइंस हाँ. ग्रेजुएट्स ही इस फील्ड में आ नहीं सकते नहीं हैं, नहीं. या अकाउंटिंग ग्रेजुएट, साइंस ग्रेजुएट्स, इकोनॉमिक्स Hmm. ग्रेजुएट्स, उनके लिए भी ये फील्ड एट लाइक एट Hmm. पर्ड्यू और एनीवेयर एल्स Hmm. ओपन होगी? लाइक व्हाट डू यू थिंक अबाउट For- दैट? लाइक हाँ, दूसरे बैकग्राउंड से तो फॉर श्योर ओपन होगी. और यही बात है कि फॉर मी लम्स प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो दूसरा बंदा हो जिसके पास लम्स की डिग्री नहीं है वो कहीं रिस्ट्रिक्ट नहीं हो गया. दे हैव ऑलमोस्ट द सेम, और ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है. दे हैव एन इक्वल चांस ऑफ गेटिंग इनटू एनीवेयर. बस यही बात है कि इंसान अपने आप को लिमिट ना करे और दे नो व्हाट दे आर केपेबल ऑफ डूइंग. तो वट एवर बैकग्राउंड दे वांट, तो वो यूएक्स ऐसी चीज है कि लोग जो है वो इकोनॉमिक्स के बैकग्राउंड से भी यूएक्स में आ जाते हैं, बट दे कांट रियली डेवलप. वो जो फिर कंप्यूटर ग्राफिक्स की साइड है, जैसे वीआर डेवलपमेंट, और जैसे मैंने आपको शुरू में बताया वीआर डेवलपमेंट हो गई, प्रोग्रामिंग हो गई,
उसके लिए यू सॉर्ट ऑफ नीड लाइक अ कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड, लेकिन उसकी भी जरूरत नहीं है। तो आई वाज अप्लाइंग फॉर इंटर्नशिप्स, और उधर जो फील्ड हैं उधर डिग्री बहुत कम लोगों ने पूछा हुआ होता है। जैसे गूगल और जो बड़ी फैंग कंपनीज हैं, दे डोंट रियली हाँ आस्क यू इफ यू हैव अ डिग्री, व्हिच इज रियली इंटरेस्टिंग। तो हाँ, गूगल ने तो आई थिंक अबॉलिश कर दिया है डिग्री exactly, एज एन। so you don't need a degree to like, if you don't need a degree to work at a huge company, the top 5 companies in the world, so I don't think you do need like a degree in a specific thing to get into like, but obviously for a grad school you will need a bachelor's degree, that's how हाँ the system works। लेकिन इस तरह नहीं है कि अगर आप कोई भी यूनिवर्सिटी से हो, जैसे आपकी ऑडियंस पाकिस्तान में कहीं से भी देख रही हो, नर्स से देख रही हो, कहीं से भी देख रही हो, मुझे शायद और इंस्टीट्यूट का नाम नहीं याद आ हाँ, रहा like we have है लेकिन हाँ NED, NUS, Cheeky, एग्जैक्टली Bias एग्जैक्टली and all of those। एग्जैक्टली, कहीं से लेकिन भी हो तो हाँ, दैट्स नहीं, दैट्स इम्पोर्टेंट क्योंकि लेकिन एक और चीज़ है, जैसे यूएक्स का जितना मुझे आइडिया है, हाउ वुड यू से कि जो हमारे पास एक फील्ड है यूएक्स राइटिंग और यूएक्स oh इटसेल्फ, लाइक yeah उसमें क्या फ़र्क है, लाइक क्योंकि यूएक्स राइटिंग में जो उनकी प्रीरेक्स होती हैं उसमें वो इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स mm-hmm, और क्राफ्टिंग स्किल्स वगैरह देख रहे mm-hmm, होते हैं, mm-hmm. बट यूएक्स इटसेल्फ में आपको कंप्यूटेशनल नॉलेज और ग्राफिक्स वगैरह की नॉलेज चाहिए होती है। तो हाउ इज़ द पर्सन हु इज़ डिज़ाइनिंग, is how important is it for someone who's writing the content and someone who's like designing the content around it, like मतलब अगर आप एक इंटरफेस Mm, डिजाइन कर रहे हो तो उसमें कुछ ना कुछ लिखा हुआ भी आ रहा होगा कि वेलकम exactly, और अ टैग लाइन और अ exactly. कॉपी और Mm, समथिंग लाइक, तो लाइक exactly. आपकी एक्सपर्टीज में लाइक हाउ इम्पोर्टेंट इज द राइटिंग बिट ऑफ इट, मतलब उसमें क्या Um, लाइक सीन होगा। so it's important if you want it to be important, to be very honest, क्योंकि जो है UX is a 4 step या 4 phase process अगर हम कह लें, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन, जो UCD प्रोसेस जिसको कहते हैं। तो पहले तो आप रिसर्च करते हो कोई भी प्रॉब्लम को, यू रिसर्च एंड देन अच्छा ठीक है भाई कौन से मसले आ रहे हैं, कहाँ मसले आ रहे हैं, क्या मसले हैं, एंड देन यू डिजाइन। तो फिर डिजाइन, रफ स्केचेस, प्रोटोटाइप्स, वो सारा कुछ करते हो। फिर उसको लिटरली मॉकअप्स, प्रोटोटाइप्स और उसके पूरा वायर फ्रेम बनाते हो उसकी, अच्छा ठीक है इस स्क्रीन से फिर इस स्क्रीन में आ रहे हैं, तो आप फिर आपकी डिजाइन को विजुलाइज करते हो एंड देन यू टेस्ट इट आउट। तो इसमें ओके। राइटिंग कैन फिट इनटू लाइक द डिजाइन, द प्रोटोटाइप पार्ट। तो अगर आपने कोई फुली फ्लेज एप्लीकेशन बनाई है, यू ऑब्वियसली नीड टेक्स्ट ऑन इट इफ इट लुक्स ब्यूटीफुल, लेकिन उसमें जो लिंग्विस्टिक्स हैं वो देर ऑफ पुअर क्वालिटी, तो आई डोंट थिंक दैट एप्लीकेशन सर्वाइव्स, राइट। जैसे आप अगर, आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू द चिपोटले एप्लीकेशन यस्टरडे, तो उसमें मैं अपना ऑर्डर कस्टमाइज करके सेव करना चाह रहा था, तो उसमें वो रैंडमली मजेदार से नाम सजेस्ट कर रहा था। तो इट वेंट लाइक द फूड स्लेयर, डू यू वांट टू कॉल दिस पर्टिकुलर ऑर्डर द फूड स्लेयर, और आई एम हंग्री, और आई वांट दिस अगेन। तो इस तरह वो मजेदार से जो टर्म्स होते हैं, दे कीप द ऑडियंस एंगेज्ड। तो आजकल के जमाने में, द 21st century, there's like there's like 1,000 different applications fighting for your time. Your time दैट्स ट्रू। is is the most valuable thing that you can present. तो ये एक मजेदार saying है कि if you're using an application for free, you're the product. So they're literally selling your data, selling they're using your time, right? दैट्स ट्रू। तो आप अगर उनको टाइम दे रहे हो, तो आप 5 सेकंड में अगर एप्लीकेशन ने मजेदार से इंटरफेस, मजेदार सी लैंग्वेज नहीं प्रोवाइड की, तो यू जस्ट डिलीट एंड मूव ऑन। तो दैट्स हाउ एम्पायर्स क्रैश, राइट, आजकल के जमाने में। मतलब बेसिकली लाइक पाकिस्तान में इतने लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आती, बट फॉर इंस्टेंस लाइक आपने एक बहुत किक-एस किस्म का डिज़ाइन बनाया, या सही है, बट अगर उसमें अंग्रेजी गलत लिखी हुई है या ग्रामेटिकल एग्जैक्टली मिस्टेक है, मतलब इमेजिन के मतलब वो कितना टर्न ऑफ होगा, मतलब अगर मैं खाना ऑर्डर कर रहा हूँ और उसमें या मतलब 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 मुझे कोई भी ग्रामेटिकल मिस्टेक नज़र आ जाती है या मुझे एड्रेस गलत नज़र आ जाता है किसी भी ब्रांड का, तो मैं तो मतलब यही कहूँगा ना यार, मतलब वाई, लाइक अगर मुझे चल ठीक है बहुत क्रेजी डिज़ाइन है, तो आई थिंक राइटिंग एस्पेक्ट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, राइट, लाइक अगर उसी में। फॉर श्योर डेफिनेटली। तो वही मजेदार बात है कि कोई भी बैकग्राउंड हो आपका, लिटरली यू कैन ऑलवेज गेट इनटू यूएक्स। बट बस किताबें हैं बहुत मजेदार सी, ये डिजाइन ऑफ एवरी थिंग्स, दिस इज लाइक द बाइबल ऑफ डिजाइनर्स। तो ओह ये ओके। नॉर्मल बड़ी मजेदार बातें होती हैं इसमें, तो ये सारी चीजें किताबें पढ़ते हैं। मतलब मैं भी इसी तरह क्योंकि लम्स में भी कोई एक यूएक्स डिजाइन के अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम ही था, जैसे इधर पर्डू में दे हैव लाइक ए यूएक्स डिजाइन अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। सही। तो इस वजह से किताबें पढ़ के और ऑनलाइन ये सब ग्रुप्स ज्वाइन करके उसी तरह मेरा इंटरेस्ट बढ़ा है, फिर प्रोफेसर से बात करके, फिर काम करके उस तरह। तो आई फील लाइक it's like a really, it's like a process, but if you're interested in anything, you can make anything happen, to be very honest. You don't need an institution label, you don't need like degrees in today's world, you don't need certifications, whatever. If you're good, it will show, जैसे portfolio में show करेगा, कहीं ना कहीं वो चीज reflect होती है, and people make like they make money, they make lots of money नहीं, obviously, but they दैट्स बड़ी ट्रू बड़ी जगहों यार, पे पहुंचते हैं फिर वो। मतलब लाइक यू सी अ लॉट ऑफ ड्रॉप आउट्स मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी यार। द अदर डे
मैं Exactly. देख रहा था एक यूएस का शू ब्रांड है, इट्स अ पाकिस्तानी कपल, एटम्स, पता नहीं शायद आपने नाम सुना Adams, हो. yeah. Yeah. That both of them are like, I don't know about the girl, but the guy who like he dropped out of FC college or something, I think, and girl from Punjab University, and they both moved to New York and they started a great shoe company यार. तो मतलब like डिग्री इटसेल्फ इम्पोर्टेंट नहीं है, बट लाइक जर्नी, जो आपकी एकेडमिक जर्नी होती है वो आपको That's true. बहुत कुछ सिखाती है. लाइक Mhm. मैं ये पॉडकास्ट का पता नहीं कोई 100 ईयर से सोच रहा था, बट आई स्टार्टेड इट राइट लाइक व्हेन आई एम इन द नेदरलैंड्स. मतलब मैंने पाकिस्तान में किया था लेकिन मैं स्ट्रीमलाइन नहीं कर पाया हाँ, उन चीज़ों को, जो पाकिस्तान में और बहुत सारी चीज़ें चल रही थी. सही बात, एंड सही बात. लाइक आप बाहर आते हो, आपका दिमाग खुलता है, आप दूसरे कल्चर्स के लोगों से मिलते हो, उनकी हम्म, रूटीन देखते हो, अकेले रहते सही हो. बात. सो आई थिंक या दैट इज Hmm. इम्पोर्टेंट. बट This अभी is a really हाँ. nice initiative, by the way. I mean, हाँ I've यार. been wanting to talk to people about this क्योंकि मुझे 10 लोगों ने पूछा कि भाई हाँ कैसे, and I sort of didn't get the time. और फिर पता नहीं, हाँ, I was wanting to help people but I didn't have a platform to do it, and then I यार saw your podcast and I was like, एक yeah. एक तो ये होता है, प्लस दूसरा पता है इशू क्या है. लाइक आई एम अज्यूमिंग यू डिड एवरीथिंग ऑन योर ओन व्हेन यू वर कमिंग टू द स्टेट्स, और यू वेंट आउट Yes. टू अ कंसल्ट. सही सो यू डिड एवरीथिंग ऑन योर ओन, राइट? आई स्टार्टेड दिस प्रोसेस मेरा जूनियर, हाँ सीनियर ईयर, Hmm. लाइक जैन में जब कोविड, हमारा रिक्रूटमेंट चल रहा था, राइट? एंड आई गॉट इनटू अ कपल ऑफ कंपनीज, इंटरव्यूज वगैरह, वो सब प्रोसेस चल रहा था. तो आई न्यू कि यार मैंने 1 साल काम करना है या 6-7 महीने काम करना है, देन आई नीड टू गो फॉर माय मास्टर्स. कोविड आ गया, सब ऊपर नीचे हो गया, मैं कराची आ गया, स्टार्टेड वर्किंग इन अ कंपनी. Mhm. मैंने जून में ये प्रोसेस स्टार्ट किया था, 2020 जून के अंदर. 2021 जून तक मैं, मतलब ऐसे, मतलब मैंने, मतलब समझो मैं कराची से निकल के ना पूरी दुनिया का चक्कर लगा के वापस आ चुका था. मैंने सारी यूनिवर्सिटीज कॉन्टिनेंटल, मतलब यूरोप, Hmm. ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मतलब ऐसी कोई, आइसलैंड के अलावा कोई जगह नहीं थी जहां मैं नहीं, मतलब मैंने अप्लाई या देखा नहीं होगा, सही. हाँ. एंड आई डिड एवरीथिंग ऑन माई ओन. एंड जैसा भी है, आई एम रियली Hmm. हैप्पी, क्योंकि यार मुझे सीखने को बहुत मिला. लाइक Definitely, मुझे definitely. पता है कि न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया का क्या सीन होता है, कनाडा का क्या सीन होता है, Hmm. जर्मनी का क्या सीन होता है, यूएस का क्या सीन Hmm. होता है. सही बात. हमारे यहाँ बहुत सारे लोग बिल्कुल क्लूलेस होते हैं. देयर लाइक यार, जस्ट गो टू अ, Hmm. इट्स नॉट रॉन्ग, लाइक यू शुड डेफिनेटली गो टू कंसल्टेंट्स फॉर एन एक्सपर्ट Hmm. एडवाइस, बट जस्ट हैंडिंग ओवर योर फ्यूचर टू देम, like that, I Yeah. think that's something I हाँ, don't agree with. क्योंकि a for lot of sure. people are actually clueless यार. मतलब like when I came here, नेदरलैंड्स के बारे में लोगों को नहीं पता होता यार. लाइक Hmm. पीपल डोंट नो कि यू गेट रेंट कंट्रोल्ड अपार्टमेंट्स हियर. पीपल डोंट नो दैट द गवर्नमेंट पेज फॉर योर हेल्थ इंश्योरेंस इफ यू आर वर्किंग. इस तरह की काफी, मतलब क्योंकि एट द एंड ऑफ द Exactly. डे, या इट्स Hmm. अ वेलफेयर स्टेट. क्योंकि खैर अमेरिका तो वेलफेयर स्टेट नहीं है, बट इवन Hmm. वर्किंग लाइक स्टडीइंग इन वेलफेयर स्टेट, राइट? बिकॉज आई वाज वेरी मच टिल्टेड टुवर्ड्स जर्मनी. और जर्मनी का जब मैंने वीज़ा प्रोसेस सुना, और मैंने बहुत सारे लोगों की, मैंने बहुत खतरनाक खतरनाक स्टोरी सुनी, तो आई वाज नॉट रेडी टू प्ले दैट कार्ड. देन आई नो अबाउट इटली एज वेल. आई एम श्योर यू Hmm. मस्ट हैव हर्ड अबाउट, या आपके दोस्त भी होंगे जर्मनी के अंदर. जर्मनी में है, या. बट या जर्मनी टेक्निकल साइड के लिए तो जर्मनी चलो फिर बहुत अच्छा है, लेकिन मेरी आर्ट्स और मीडिया की फील्ड थी. So I got into a few colleges, but वो यही था कि visa and everything, and that's super important यार, क्योंकि people don't have any people सही don't have बात, any clue about सही बात. And it's about natural, to be very honest. I feel like हर बंदा clueless होता है, लेकिन the ones that get beyond that point work really hard. So I feel हाँ. like hard work, obviously circumstantial भी है ये चीज. Not everyone has the हम्म, capacity at a particular point in their life to work really hard. privilege भी So होता है यार, to look exactly. for schools and to not to Mhm. work and earn Yeah, money is also a privilege, right? Like अगर आप for नौकरी sure. के साथ साथ, Completely लोग agree. यहाँ पे दो दो Mhm. नौकरियां कर रहे हैं, they don't have time to eat another meal in a day. Mhm. तो जाहिर सी बात है, like to look for schools itself is a very Definitely, important opportunity. definitely, But like definitely. if not the US, what else? Like I'm not sure if you remember the universities names, but अगर और कोई आपका experience रहा like applying elsewhere, like you don't have to Um, remember the exact yeah, details, yeah. but So I applied to 4 universities, 4 to 5. यूरोप में मैंने सिर्फ EIT किया था क्योंकि इरास्मस में शायद मुझे कोई डिजाइन UX HCI का कोई हाँ प्रोग्राम नहीं मिल रहा था, बट सही है. आई एम नॉट श्योर व्हाई आई डिडंट अप्लाई टू इरास्मस. शायद, पता नहीं, आई एम नॉट श्योर. शायद हाँ US मेरा वो था मेन, हाँ. इस वजह से, बट आई एम नॉट श्योर. तो EIT डिजिटल किया था यूरोप में. फिर अमेरिका में 3 की थी, पर्डू, यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना एट चैपल हिल, और फिर MIT.
So I Okay. got into UNC and Purdue. MIT से rejection आया था, so that hurt, but yeah. यार So MIT is at the end of the day MIT, right? तो मतलब exactly, yeah, मसला नहीं exactly. है. So I wasn't really sad. Sahi, sahi, sahi. And why did you go for Purdue and not UNC? Like उसके पीछे क्योंकि I'm assuming कि आपका वो like graduate वाला assistantship वाला सीन तो बाद में हुआ होगा, but you हाँ had to हाँ, make for a sure. decision, right? So why Yeah, not Chapel Hill and why Indiana? क्योंकि UNC is technically in a very, I would say, more urbanized environment, क्योंकि yeah, वो थोड़ा yeah. सा मतलब फिर भी North Carolina, the state itself is like Hmm. मतलब I won't say Hmm. advanced, but थोड़ा सा मतलब वहाँ पे Yeah, कमर्शियल वायबिलिटी ज्यादा है, urban लाइक जगह है वो, सही बात, अर्बनाइज सही ज्यादा है. बात. ये एक फैक्टर था, बट दिस वाज लाइक एट द रियली बॉटम ऑफ माय लिस्ट. अब जो दूसरे फैक्टर्स थे उसमें यही थी कि बात, अब यूएनसी की जो असिस्टेंटशिप्स थी वो कह रहे थे हम अनाउंस करेंगे जुलाई में. ओके. ओके. अब पेडू का इस तरह का सीन था कि उधर भी इन्होंने टीए शिफ्ट जो है वो जुलाई में ही अनाउंस करनी थी. तो टीए शिफ्ट्स आर आल्सो ग्रेजुएट असिस्टेंटशिप, उसमें आरए शिप और टीए शिप, राइट. तो अब यूएनसी जो थी वो आरए शिप वगैरह इतना देती ही नहीं थी वो. तो अब ओके. जो, हाँ, अब उनका आरएशिप इस तरह डायरेक्टली आप कांटेक्ट करके नहीं, तो इतना शायद प्रोफेसर्स की ऑटोनॉमी नहीं थी या होगी, आई एम नॉट श्योर, ऐसे कुछ था. तो अब यूएनसी कह रहा था वेट टिल जुलाई एंड देन वी अनाउंस द टीए शिप्स, इफ यू गेट इन यू गेट इन, बट इट्स रियली वही मसला है कि बहुत ज्यादा competitive है फॉर जो कि आ रहे हैं इनकमिंग ग्रेजुएट स्टूडेंट्स टू गेट असिस्टेंटशिप. क्योंकि वो जाहिर सी बात है, अगर आप सिस्टम के बारे में सोचो तो जो लोग ऑलरेडी देर इन द सिस्टम तो उनको प्रेफरेंस दी जाती है. जैसे मेरे दोस्त हैं जो टीए शिफ्ट हैं उनके पास, तो उनको ऑब्वियसली प्रेफरेंस दी गई क्योंकि बिकॉज दे कुड मीट द कोऑर्डिनेटर इन पर्सन एंड दे कुड वॉक टू देयर क्योंकि ऑफिस वो एंड गो वहाँ लाइक पे अच्छा ठीक पहले है. से थे, राइट? वो वहाँ पे एग्जैक्टली, दे मास्टर्स कुड कर रहे वॉक थे. इनटू देयर ऑफिस एंड गो लाइक ठीक है यार, मैं इन चीजों में प्रोफिशिएंट हूं, इफ यू कुड साइन मी अप फॉर असिस्टेंट इन द फ्यूचर. देयर इज लॉट्स ऑफ प्रोफेसर्स, जाहिर सी बात है टीएस चाहिए ही होते हैं. तो उस तरह से फिर हो जाता है प्रोसेस. बट यस, तो पर्डू में मुझे फिर असिस्टेंट की आरशिप मिल गई, तो फिर आई वाज लाइक या बस लेट्स जस्ट गो फॉर पर्डू. लेकिन ये एक्सेप्ट होने के बाद की थी, तो यूएनसी को रिजेक्ट करने का मेजर यही मत था कि द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग एन आरशिप वाज हायर एट पर्डू बिकॉज ऑफ both of them are public universities, yes, but I was like I don't know, I mean थोड़ा सा शायद पाकिस्तानी कम्युनिटी भी थी इधर ज्यादा. आई कुड yeah, ये अच्छा, भी बड़ा यहाँ पे ज्यादा है वहाँ पे कम, लाइक? यहाँ पे ज्यादा है. तो अच्छा. I talked to like a couple of seniors on campus at Purdue, तो उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है असिस्टेंटशिप आरशिप का पॉसिबिलिटी है, लेकिन यूएनसी में couldn't find anyone from पाकिस्तान. तो वही बात है कि अब जो अलुमनाई नेटवर्क है लम्स, यूएनसी चैपल हिल में शायद इतने नहीं है, एनसी स्टेट में है, नॉर्थ कैरोलिना स्टेट में थे थोड़े बहुत, उधर मैंने अप्लाई नहीं किया था खैर. तो फिर यूएनसी चैपल हिल में आई कुडंट रियली फाइंड, रेडिट पे एक दो पोस्ट थे, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता था. The lack of information that I had on this program, as well as not being able to talk to alumni, was a major reason that I didn't decide to go for नहीं, UNC Chapel that's Hill. important क्योंकि Yeah, like primarily आपको alumni network काम आया, right? Like for you sure. you बहुत. looked out for like Mm, like-minded Pakistanis or alums yeah. graduates जो पहले से आपकी यूनिवर्सिटी में, so Mm, that is also important. uh, यहाँ पे इतने ज़्यादा नहीं है, but even when I was mm, coming here and I reached out to someone and on LinkedIn randomly out of nowhere, and that was also not even a university connection, that was a Nixer college connection, okay. and I'm staying in his apartment now and he moved out Uh, to another city in the Netherlands. So randomly, like निक्सर में कभी शायद बात भी नहीं की थी मैंने उससे, बट क्योंकि मेरा एक कनेक्शन था, मेरे लिंक्डइन पे निक्सर कॉलेज mm, था, राइट? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लाइक व्हेन यू आर अप्लाइंग टू mm, डिफरेंट स्कूल्स. एंड हमारे यहाँ बहुत सारे लोग समझते हैं कि पाकिस्तानी सिर्फ न्यूयॉर्क में होंगे या टोरंटो में होंगे या एलए mm, में होंगे. पाकिस्तानी लाइक आपको मिल जाते हैं, मतलब लाइक for sure. आपको कहीं ना कहीं Definitely. आपको मैड्रिड में भी मिल Definitely. जाएंगे, आपको बर्लिन में भी मिल जाएंगे. तो लाइक जो एक अपनी Mm, फील्ड परसू कर रहा है वो फिर लाइक yeah. आपको हर सिटी में Exactly. That's what I'd say relatively. to everyone watching this कि लोगों को यही मैं advice करूंगा कि don't let labels restrict you. कि भाई ठीक है, I'm a Pakistani, so I won't really find other Pakistani. You will. तो reach out to people on LinkedIn. LinkedIn पे बहुत आवाम बहुत जगहों पे जो कि हमें पता भी नहीं होता. और फिर हम सरप्राइज होता है कि ये भी पाकिस्तानी है. यार तो that is really interesting. यहाँ पे लाइक आई फाउंड लाइक फैमिलीज लिविंग हियर लाइक इन ग्रोनिंगन. लाइक Exactly. ग्रोनिंगन का मुझे Mm, मुझे नहीं पता था कि नेदरलैंड्स में कोई ग्रोनिंगन नाम का शहर है. एंड आई फाउंड लाइक mm, फैमिलीज लिविंग. आई ऑलवेज न्यू अबाउट एम्स्टरडम, रॉटरडैम, बस मुझे इतना ही mm. पता था. बट या that is super important. And Exactly. Exactly. so like
the alumni network helped you, and you got a good deal out of your assistantship, and Yeah. like you knew a couple of seniors here, so that was Hmm. like key factors in your decision, right? For Like sure. when Yeah. you chose Purdue. Hmm. But like we're not almost at the end, but like towards the end, just जो आखिरी बात है कि how would you imagine your career path after this? Suppose आप इंशाल्लाह graduate हो जाते हो May 2023 में, and there's not like your field, I suppose US से बेहतर दुनिया में कोई जगह नहीं है काम करने के लिए, Exactly. the field Hmm. you are pursuing, right? Like Hmm. आपके बे एरिया है, आपका सिलिकॉन वैली है, आपका like I would say New York as well, क्योंकि you're working in graphics and उसमें फिर Yeah. fashion का भी aspect आ जाता है. So Hmm. like what's your plan? Like मुझे no pressure, but like what's Yeah. just the thought कि यार Hmm. करना क्या आगे. आगे क्या करना, दैट इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. तो अभी फॉर लाइक द शॉर्ट टर्म गोल्स, तो अभी मुझे आई एम लुकिंग फॉर समर इंटर्नशिप्स. तो Okay. उसमें आई बीन अप्लाइंग टू प्लेसेस, getting interviews, getting rejected. That's really Yeah, important. that's part of the journey, तो मतलब For उसका कोई sure. मसला नहीं है. उसी से सीख दो आप. Yeah. तो this also applies to admissions, right? Graduate admissions. उससे भी आप सीखते हो, reject होते हो, उससे सीखते हो आप. So internships in the short term, the long term में I'd want to work here in the US. इसी वजह से US में I'm pursuing a master's degree. So sort of getting a job anywhere for that matter. I'm not picky in that regard. लेकिन yeah, अब ये मसला है कि बे एरिया में जब जाते हो तो you pay lots of taxes, but you earn more as well. तो स्टेट टू स्टेट टैक्सेस का भी बहुत ज्यादा इधर सीन हाँ. होता है. तो I'm if I, guessing for example, Texas if I, में taxes बहुत कम है. Texas like. हाँ हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली, हाँ, तो उनमें तो शायद टैक्स खत्म ही कर दिया था इस पे किसी चीज के ऊपर, शायद पता नहीं, बढ़िया है. तो अच्छा. इसीलिए सारे जो मेजर हब्स हैं जैसे टेस्ला वगैरह जो है, ये सारे शिफ्ट हो रहे हैं टेक्सास में, ताकि हम्म. उधर उनको ह्यूस्टन वगैरह में काफी चीजें खुल रही हैं. टेक हम्म. का सीन बढ़ रहा है उधर क्योंकि टैक्स नहीं देते वो. नहीं, ये तो टैक्स इम्पोर्टेंट है. देते नहीं है, मतलब है नहीं उधर टैक्स. और बे एरिया तो आई थिंक सैचुरेट भी हो गया है, मतलब बे एरिया में तो भर गए हैं लोग, मतलब बे एरिया तो अब एक वो लिटरली बन उधर गया एक है. एवेन्यू है, मुझे नाम नहीं याद उसका, लेकिन उधर आप वॉक कर रहे होते हो तो उधर, ओ अच्छा भाई, फेसबुक का इधर वो बड़ी सी टावर है, एक स्नैपचैट, अच्छा हम्म. उधर छत पे जा रहे हो आप लिटरली फेसबुक के हेड पर, तो उधर आपको हम्म. स्नैपचैट सामने नजर आ रहा है, उधर हम्म. माइक्रोसॉफ्ट है उधर. तो इट्स लाइक यू आर लिटरली एट द हब ऑफ टेक्नोलॉजी, जिधर सारा कुछ बन रहा है, हो रहा है, दैट इज हम्म. वेयर एवरीथिंग इज हैपनिंग. So it's insane, it's surreal. I obviously I haven't been there. I've heard the stories as well. Fingers crossed that I make it. हाँ. लेकिन तो अभी शॉर्ट टर्म में तो इस तरह इंटर्नशिप का सीन है, फिर लॉन्ग टर्म में अगेन जॉब एनीवेयर इन द यूएस पॉसिबली, फिर देन जस्ट अभी तो ये पार्ट है जिंदगी का, 20s के स्ट्रगल आप कर सकते हो. आई थिंक यार अर्ली ट्वेंटीज 20 से 30s में आप ये सब कर सकते हो. लाइक एग्जैक्टली एग्जैक्टली, 30s मेरे लिए आई एक्सपेरिमेंटेशन. वुड से एटलीस्ट 30s, क्योंकि लाइक आई विल टर्न 25 नेक्स्ट लाइक इन 2 months, so like या मेरे लिए तो मैं आई वुड स्टिल गिव माई सेल्फ लाइक नहीं, a फॉर श्योर. couple of years 30s important 30s है. में भी, अर्ली 30s इज लाइक you're struggling है. वही एज इज जस्ट अ नंबर, तो अब जब तक स्ट्रगल कर सको आप करो, बट देन एट अ पॉइंट you're like ठीक है अब बस बहुत हो गया, लेट्स जस्ट सेटल डाउन. तो आई जस्ट वांट, I'm हाँ. always I've always been the sort of person to like give it my best, और मतलब मुझे इतना मसला नहीं होता कि मैं बस एक जगह से दूसरी जगह भी चला जाऊं, तो इतना मैं किसी चीज पे वो अटैच नहीं होता, नहीं, स्पेस that पेस is स्पेशली. that या is important यार. what you just said कि आप एक जगह से अटैच नहीं होते. आई थिंक हाँ. अकेले रहना भी like you're in like here right now, but I am sure कि आप जो 4 साल कराची से दूर लम्स में रहे हो, you're एग्जैक्टली. from Karachi, right? Like as यप. far as I remember. So या. आप लम्स में भी 4 साल अकेले रहना, like I know a lot of people जो who went to IBA or any other local institute in Karachi, and अगर वो मास्टर्स के लिए कहीं भी दुनिया में जाएंगे तो उनको प्रॉब्लम डेफिनेटली होगा, क्योंकि फॉर हम लोग श्योर. 4 साल बैचलर्स के अलग रह चुके हैं, मतलब इतना उसी से अलग नहीं सीखा है था. वैसे, टू बी वेरी ऑनेस्ट. जो हाँ पहले लाइक. लंग में साल होता था उधर होम सिकनेस होती थी, मतलब उधर मुझे पहले साल बहुत ज्यादा होम सिकनेस हुई है, बट आई डिडंट हैव एनीथिंग एल्स टू डू, राइट? अभी दोस्त बनाए थे उसी उनके, उनसे फिर आप दोस्तियां बनते हैं, उससे फिर अच्छा लगता है आपको. और आई वाज रियली लाइक attached to my family. I still am. But it's like, हाँ, you sort of learn how to live on your own. You learn how to manage your time. You learn कि अच्छे calls के through भी आप वही meaningful conversations कर सकते हो उनके साथ. Obviously physical आप एक space में रह रहे हो तो वो different connection है, लेकिन still. Yeah, this is actually important. Before this we were talking about the metaverse, or like Hmm. coming towards the end of Yeah. it, no Yeah. expertise, but आप imagine करो कि अभी हम like I am in the Netherlands, you're in the US, और अभी हम दोनों WhatsApp call के through अपनी family से बात कर सकते हैं. Yeah. And the way metaverse is expanding, मतलब supposedly Yeah. आपका metaverse में घर हो,
वहाँ आपके पेरेंट्स भी रह Yeah. रहे हैं, आप भी रह रहे हो, और Mm, मतलब सो व्हाट यू आर डूइंग इज वेल, मतलब आप अभी तो चलो नॉट इन आवर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब फिजिकल बाउंड्रीज और mm, पासपोर्ट्स और वीजास और वो सब तो यार इवेंचुअली मतलब खत्म हो जाएगा। लाइक mm. मेटावर्स में मुझे तो कोई वीजा नहीं चाहिए मेटावर्स के लिए, राइट? लाइक एग्जैक्टली, लाइक दिस इज Yeah, सो इम्पोर्टेंट, राइट? yeah, क्योंकि yeah. करेंसी डिजिटलाइज होती जा रही है, Mm, रेगुलेशंस कम होती जा रही हैं, mm. ब्लॉक्स बनते जा सही रहे बात. हैं, लाइक जैसे It's insane. Yeah. there's EU, then there's the US, then there's Canada, then there's Mm, Australia, then there's like the Asians, Japan and China, Japan with Australia. And so I mm. think this is also important because हम सब होम सिक हो सकते हैं, बट व्हाट इफ होम सिकनेस का एस्पेक्ट ही खत्म हो जाए अगले 10 सालों में? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? It's really interesting how you mentioned this. So यही है कि I was talking to my mom the other day, आज ही सुबह, तो हम यही बात कर रहे थे कि खाला जो है she lives in Canada. तो mom told me when she married and she went to Canada, my खाला, तो उधर they weren't able to talk properly for 4 years क्योंकि वो कॉल करते थे पेड कनेक्शन में, वो बस कॉलिंग हेलो हेलो कॉलिंग पे कार्ड आया करता था। वो हेलो हेलो के दौरान ही टाइम खत्म पे कॉल का. या So they weren't able to talk. Sisters, they weren't able to talk for 4 years. But right now, वेब आई, वर्ल्ड वाइड वेब, उसमें फिर कनेक्शन बढ़ना शुरू हुआ. अब जो वेब 3.0 का इसके बाद ट्रांजिशन है, that's really important for our generation to understand. I've sort of been writing on this as well using Medium. I'll talk. We can talk about that later. But yeah, so nahi, just give me your Medium link. I'll add that in for the sure. description. Yeah, definitely, definitely. I like, So I love fellow Medium writers. I write in Medium as well, so it's a good thing. so I've sort of been talking about yay metaverse and NFTs and what that space looks like. So it's really important for us to not just shove this off क्योंकि हम पाकिस्तानी टेंडेंसी हमारे अंदर यही होती है ना कि बेकार चीजें नहीं, Hmm. मत बेकार, it's just waste of time, right? So it's really important for us to understand how Web 3.0 works and how हम इस space से उस space में transition कर रहे हैं. और जहाँ तक metaverse की बात है तो यही है कि हर कंपनी जो है वो सॉर्ट ऑफ अपना एक मेटावर्स बनाने की कोशिश करती है. तो जो मेटा है फेसबुक, उस दैट्स नॉट द सोल मेटावर्स दैट वील हैव. एवरी कंपनी इज सॉर्ट ऑफ मेकिंग देयर ओन मेटावर्स. माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, इन सब ने बड़ी बड़ी कंपनीज इन्वेस्ट किया अच्छा खासा पैसा डेवलपर्स के लिए जो कि मेटावर्स बना सके उनके लिए. तो माइक्रोसॉफ्ट के मेटावर्स इस तरह की चीज है जिसमें आप ऑफिस स्पेस में बैठे हो, वॉक करो, बात करो लोगों से. फेसबुक का मेटावर्स की कोई और ही परसेप्शन है. तो इट्स अ रियली इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टाइम जिधर वी आर जस्ट सॉर्ट ऑफ, जो नहीं कहते आप, फिजिकल स्पेस हमने बस ठीक है, हमने अभी वेब 2.0 से सारा कुछ एस्टैब्लिश कर लिया कि हम डिस्टेंस खत्म हो चुका है, हम बैठ के आप नेदरलैंड में हो, मैं यूएस में हूं, कोई मसला ही नहीं है. अब वेब 3.2 में हम सेंस ऑफ स्पेस जो खत्म करने जा रहे हैं ना, विच इज रियली इंटरेस्टिंग. तो वो माइंड बॉगलिंग है वो चीज कि आप किस तरह से लिटरली एक अपनी स्पेस में बैठे हो. यू जस्ट पुट ऑन अ हेडसेट. इन द फ्यूचर आई नॉट वांट अ हेडसेट, बट हाँ, तो किसी तरह से आप अपनी स्पेस में बैठे हो लेकिन वो सेंस ऑफ प्रॉक्सिमिटी खत्म करने जा रहे हो आप. तो उस पर बड़ी रिसर्च हो रही है कि किस तरह से आप ये जो प्रॉक्सिमिटी है वो एक नई तरह से ट्रांसलेट कर सको कि आप एक स्पेस में बैठे हो, दूसरा बंदा लिटरली, इमेजिन इफ यू एंड आई वर हैविंग दिस कन्वर्सेशन, आई वाजंट लुकिंग एट अ वेब कैम, आई वाज लुकिंग straight at you, and this we are having this conversation. So there's the thought of that is really interesting. And it's also important to understand कि ये चीज in the works है. In potentially the next 5 years we will see this being implemented. अभी अगर आपने Oculus वगैरह ट्राई किया हो तो उसमें applications हैं that exist. हम मेटावर्स, मेटा ने ही होराइजन एक एप्लीकेशन बनाई है और एक शेप्स VR है, बहुत सारी एप्लीकेशन है. उसमें आप हेडसेट पहनते हो, यू कैन लिटरली मेक स्टफ, डू स्टफ, प्ले टेबल टेनिस विद योर फ्रेंड्स. I have this headset. I've literally played a few matches of table tennis with my friends that like are in Pakistan. So it's like you are playing table tennis, which actually, because I've played lots of table tennis back home as well. तो उसमें लिटरली आप टॉप स्पिन अगर ऐड कर रहे हो तो उसमें टॉप स्पिन ऐड हो रही है जस्ट बाय द फोर्स दैट यू आर यूजिंग द कंट्रोलर विद. तो ये कंट्रोलर भी बहुत मजेदार है इसका. And you're So just wearing if you your look VR at this, headset, right? it's insane. Like you're just wearing your VR headset Yeah, and you're playing table tennis जैसे एक Nintendo Wii आता था एक ज़माने में. yeah, सो तो exactly. चलो बहुत आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है कंपेयर टू दिस, बट आप अपना हेडसेट पहन के पाकिस्तान में किसी बंदे के साथ टेबल टेनिस खेल सकते हो. एंड Yeah, लिटरली द फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ इट वो डिमिनिश होता जा रहा है, राइट? दिस इज insane. सो इम्पोर्टेंट क्योंकि especially in our part of the world हमारे इतने मसले होते हैं, like we need to apply for visas and we need to get permissions and we need to like upload bank statements and everything. And with this
मतलब कोई, Sorry. या नो नो वरीज, मतलब मैं ये सोचता हूँ कि कोई लियारी में भी बैठा हुआ है एंड ही कैन interact with someone, let's say in Saskatoon in Canada, like -46 में भी, मतलब it's all through the web and through internet, right? मतलब फिजिकल वो तो खत्म हो जाएगा, लाइक इन द नेक्स्ट, आई वुड से, लाइक हमारे यहाँ तो चलो, Exactly. हमारे यहाँ भी हर चीज आ जाती है, थोड़ा धक्का स्टार्ट टाइप आती है, बट लाइक इन द फर्स्ट वर्ल्ड Hmm. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पाकिस्तान में भी एनएफटी स्पेस डेवलप हो रही है, और Hmm. पाकिस्तान में भी लाइक लाइक चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता डिजिटलाइज हो रही हैं। Hmm. द सही बात. Very true. अदर डे यूएस में कोई कन्वेंशन हो रही है, फॉलो दिस गाय बिलाल बिन साकिब, मैं देख रहा था, वो एनएफटी के ऊपर पूरी कन्वेंशन हो रही है वहाँ पे, लाइक Oh, प्रॉपर कन्वेंशन, लाइक देयर thousands ऑफ पीपल ओवर देयर जो वहाँ पे मतलब कुछ कर nice. रहे होंगे, आई डोंट नो क्या, बट या दिस इज इम्पोर्टेंट एंड What's Bilal bin Sakim doing in the US? वो यूके के नहीं थे boys, मोमिन और बिलाल, those brothers, मोमिन right? दोनों यूके के हैं, लेकिन आजकल मोमिन लाहौर में, एंड आई सॉ बिलाल in the US on an NFT convention, Ah, NFT slash metaverse convention on Instagram. NFTs is like a whole other ball game. उसमें यही बात है कि us as human beings, we value status. तो अभी जैसे लोग अपने आईफोन्स फ्लैश कर रहे होते हैं और लोगों को अपनी टेक्नोलॉजी और लोगों को कपड़ों और उन सब चीजों से स्टेटस पोर्ट्रे करते हैं, राइट? अब जो है वेब 3.0 के जमाने में, व्हाट डज दैट लुक लाइक, हाउ डज दैट ट्रांसलेट इनटू द वेब 3.0? दोस थिंग्स आर एनएफटीज. सो इमेजिन हैविंग लाइक रियली, लाइक बीबल का जो वो बीबल इज द एनएफ, बहुत सबसे ज्यादा महंगे उसने एनएफटीज बेचे हैं. तो बीबल की एक बड़ी सी फ्रेम थी, वो $69 million की बिकी है. इट्स लाइक कलेक्शन ऑफ हिज आर्ट वर्क. तो 16, ही इज लाइक ऑन द थर्ड लिस्ट जो है, वो पॉपुलर आर्टिस्ट किसमें थर्ड पे है, वो मोस्ट अर्निंग आर्टिस्ट में दुनिया में आज तक. 1800 सदी से वो बना रहे हैं आर्ट, और बीबल जो है आजकल का एक लौंडा, वो थर्ड पे आ चुका है. दैट इज इनसेन. मतलब यहाँ पे आर्टिस्ट लाइक मर गए, वैन गो टाइप, लोगों ने एग्जैक्टली. कान काट दिए, एक दूसरे के हाथ काट दिए, और राइट इनसेन. नाउ मतलब यू एंड मी टॉकिंग, हमारे एक्सप्रेशंस की मीम मिलियंस ऑफ डॉलर्स की बिक सकती है, लाइक इन दी एनएफटी स्पेस, एग्जैक्टली. राइट, लेटर। तो वो यही बात है कि स्टेटस जो है वो फिर आप एनएफटी स्पेस में इसी तरह से है कि अगर आप कोई बड़े मशहूर आर्टिस्ट का एनएफटी खरीद रहे हो, तो वो अपने मेटावर्स में अपने घर पे लगाते हो, या जो बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं आजकल भी ट्विटर पे अच्छे, जो वो बोर्ड एज यार्ड क्लब जो है, BAYC जिसको कहते हैं, तो उनके जो एनएफटीज हैं वो इतने महंगे बिकते हैं, वो कोई 300-400 thousand डॉलर्स के एवरेज पे बिकता है वो. तो उसकी लोग खरीदते हैं और फिर उसकी डिस्प्ले बना देते हैं ट्विटर, फेसबुक वगैरह पे. तो वो क्या सिग्निफाई कर रहा है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी पे आ जाते हैं हम. तो वो यही सिग्निफाई कर रहा है कि इंसान को हमेशा स्टेटस किसी तरह बताना होता है लोगों को, जो मशहूर हैं सारे, वो इसी तरह तो करते हैं कि ट्विटर पे वेरीफाइड साइन है तो चलो भाई ठीक है, थोड़ा बहुत स्टेटस है आपका. इसी तरह एनएफटी स्पेस और वेब 3.0 मेटावर्स वाली स्पेस में, अगर आपके पास एक अपने मेटावर्स में बड़े से घर इमेजिन करें, आप अपना अपनी स्पेस इमेजिन करें जिस तरह भी, उसमें बड़े बड़े मशहूर मशहूर एनएफटीज आपने दीवारों पे लगाए हुए हैं, तो वो अगेन जस्ट शोज स्टेटस, जस्ट शोज दैट यू आर वांटेड, जस्ट शोज दैट यू आर पॉपुलर. तो it's just mind-boggling. It's very very interesting. Understanding this space is again really important. I don't think I have like a really solid understanding of this as well. you have a way better So I understanding than just me, at least, मतलब आपका understanding I just मुझसे read बहुत up on better this, write a bit about it. So I've sort of developed an understanding of this. Lekin not near to jitna inke sabke paas hota hai. The ones that are actually involved, really involved in this. And the other day I was also hearing कि जो board 8 ape yacht club ऐसा कुछ है, BAYC. तो उनके जो वो हैं जिनके पास उनके पोजीशन है एक एनएफटीज की, तो उनके लिए एक न्यूयॉर्क में एक्सक्लूसिव पार्टी रखी जा रही है, जिधर आप लिटरली एक याद करा रहे हो, उधर उधर फिर मिल रहे हैं. तो वही ग्रुपिंग्स, वो आपको पता ही है सारा कुछ कि हम इंसान जो है ग्रुपिंग से सर्वाइव करते हैं, हमें एक ग्रुप चाहिए, सोर्स ऑफ वैलिडेशन चाहिए. तो वो एनएफटी ये लिटरली वेब 3.0 के थ्रू जो है वो ग्रुप्स बन रहे हैं, जिसके थ्रू अगर आपके पास पोजीशन है इस एनएफटी की, तो यू विल बी इनवाइटेड टू दीस एक्सक्लूसिव इवेंट्स, लिटरली मीट अदर पीपल, सोशलाइज, नेटवर्क. तो आपको ये पता है कि लिंक्डइन और वो सब नेटवर्किंग की कितनी जरूरत है. तो इफ यू आर रिच, यू विल मीट अदर रिच पीपल और इसी तरह से यू जस्ट यू ग्रो. so amazing यार, मतलब ये you were saying this is like really cool. लेकिन हमारे मुल्क में लोग फेज 8 के प्लॉट्स और फेज 6 के प्लॉट्स और दुकानों से और गाड़ियों से और 40-40 लाख की सिविक से जब बाहर निकलेंगे, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट इट्स वेरी स्केरी कि एक टाइम आएगा जब ये प्लॉट्स और ये गाड़ियां नेग्लिजिबल हो जाएंगी इन टर्म्स ऑफ वेल्थ, क्योंकि क्या पता इनकी कोई वैल्यू ही नहीं रहे इन द नेक्स्ट 20 years.
इनकी शायद अगर मतलब हमारे यहाँ तो नहीं, बट व्हाट इफ इन द नेक्स्ट 30 इयर्स जब करेंसी इतनी डिजिटाइज हो जाएगी कि पीकेआर और यूएसडीज की वैल्यू ही नहीं रहेगी. मतलब इमेजिन अ यूनिवर्स जहाँ पे एनएफटीज की वैल्यू होगी और आपकी आपके क्रिप्टो एसेट्स की वैल्यू होगी, और आपके पास जो लॉकर्स में गोल्ड पड़ा हुआ है और बैंक अकाउंट्स में डॉलर्स पड़े हुए हैं, उसकी शायद नेग्लिजिबल वैल्यू. लाइक इट कैन यही नॉट बात है, काफी मजेदार एरा हम उसमें जाने लगे हैं. जो ये चीजें, जैसे हमारी यही बात कर रहे थे आपकी गाड़ियों वगैरह की, वो भी स्टेटस है, राइट? तो अभी आजकल के जमाने में एक ब्लैक जो वीगो है पाकिस्तानी, जो मीम है हमारा, तो ब्लैक एक वीगो की 1.5 करोड़ वैल्यू है. रुपए, डेढ़ हाँ, 1 करोड़ तो रुपए वो समथिंग. फिर अगर एनएफटी स्पेस में वेब 3.0 में ट्रांसलेट करें तो शायद पाकिस्तानियों के पास वीगोस हों एनएफटी मेटावर्सेस में. या लेकिन बात हुई है कि स्टेटस. तो या मतलब हर बंदा यही किसी ना किसी तरह एनएफटीज कर रहा है. फिर उनकी जो रीसेल भी है, अगर आप ड्रॉप हो रहा होता है जैसे एनएफटीज, तो अगर आप किसी एनएफटीज की वाइट लिस्ट में आ जाओ तो आपको वो ऑफिशियल मार्केट प्लेस से पहले 2 दिन पहले एक्सेस मिल जाता है. तो यू कैन बाय एज मेनी एज यू वांट. फिर जिस दिन रिवील होगा तो आपको पता चलेगा कि अच्छा वो मेरे पास ये वाला एनएफटी है. तो इफ इट्स अ रेयर वन, तो आपने अगर $100 का लिया तो आपको पोटेंशियली $1000 का बिक सकता है वो. but how do you like explain me like how do you pay for it, like वो भी क्रिप्टो प्लॉप like उसके अंदर ही डील हो रहा इथीरियम. होता है इथीरियम, और इथीरियम ब्लॉकचेन. मतलब वो ब्लॉकचेन में डील हो रहा होता है, यू कांट पे आउट ऑफ योर पेपैल फॉर नहीं, एनएफटीज, या इस तरह का कोई नहीं, सीन नहीं है? एनएफटीज आजकल इथीरियम पे है, लेकिन सुनने में आ रहा है कि वो इथीरियम 2.0 पे ट्रांसलेट होगा आगे जाके. लेकिन हाँ, इथीरियम पे बेस्ड है सारा कुछ एनएफटी का स्पेस. और फिर यही आसान है इतना प्रोसेस. यूट्यूब पे हजारों वीडियोस मिल जाएंगी. यू हम्म. लिटरली हैव लाइक अ ब्रोकरेज, जिधर आपके पास एनएफ वो कॉइन्स पड़े हुए हैं, आपके वॉलेट हम्म. होगी आपके पास कोई, फिर उधर से आप मेटा मास्क में ट्रांसफर करोगे और मेटा मास्क के थ्रू आप कहीं भी ओपन सीज वगैरह पे जाके खरीद सकते हो. This is really cool यार, Yeah. क्योंकि like the masses they still don't know about it, और वो अभी तक वही मतलब बैचलर्स हम्म. डिग्री, गुड जॉब, वाइट पिकेट फेंस, 2 बच्चे, वो एक पूरा का पूरा लाइफस्टाइल चेंज होने वाला है. लाइक द वे एग्जैक्टली. we are दैट्स going वेरी ट्रू. towards individualism, less boundaries, more connectivity, more digitization. And like maybe be डेफिनेटली. like some of my courses they're about network theory and like networks, like on like हम लोग ट्विटर और रेडिट पढ़ते हैं. like मेरी पूरी डिग्री लिटरली 4 वर्ड्स में मेरी डिग्री है: फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, रेडिट. मतलब जो 2 साल मैंने पढ़ना है. Like we extract data, we read people's comments, we go through threads, we understand their space कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं. Oh, very अभी interesting. डोनाल्ड ट्रम्प माइट लॉन्च हिज ओन सोशल मीडिया कंपनी, ट्रूथ सोशल. वो निकालने वाले हैं क्योंकि उसको ट्विटर ने तो अभी तक बैन किया हुआ है उस बंदे को. एंड वो क्या होगा, वो एक एक्सट्रीमली राइट विंग स्पेस होगी जिसमें सारे ट्रम्प सपोर्टर्स आपस में एक दूसरे की खाल उतार रहे होंगे. मतलब अगर ट्रूथ सोशल लॉन्च हो जाती है, आई एम नॉट श्योर अगर उनके अप्रूवल्स हो गए, बट आई वाज रीडिंग अप द अदर डे. So Oh, this has been awesome यार. And like whenever you get time, हम ये बिल्कुल एक NFT और मल्टीवर्स स्पेसिफिक, for sure. मैं मल्टीवर्स बोल दिया, I'm a sorry, I'm a नहीं, नहीं, कोई. मैं बहुत सुपर हीरो फैन भी हूँ, बट खैर मेटावर्स मल्टीवर्स भी बात कर सकते हैं, बट मेटावर्स फॉर नाउ. मेटावर्स एंड एनएफटी, इस पे एक स्पेसिफिक स्पेस रखते हैं किसी दिन. इफ यू For sure. अदर फोक्स इन माइंड हु वुड बी विलिंग टू ज्वाइन, हम एक 3-4 लोगों की रख लेते हैं. आई कैन मॉडरेट द डिस्कशन. Definitely. Definitely. And if you have someone else in mind studying with you or in the US who wants to come on this forum and share their journey so far, so will be like they're For more than sure. welcome to do so. Definitely. Definitely. So it has been really great, yaar Ali. We are almost at the 1 hour 10 minutes mark. Mm-hmm. So अभी तो वहाँ पे शाम हो रही है, so enjoy the rest of your Sunday. मेरी I'll तो go रात make हो रही myself है. some chai. मैं भी शायद, खैर अभी तो मैं जाग रहा हूँ, बट मैं रात में मैं खैर इट्स रेनिंग, आई हैव बीन आउट लाइक इन द लास्ट 2 days, निकल ही नहीं सकते. Oh, तो आई एम जस्ट इनसाइड, आई जस्ट एडिट दिस एंड अपलोड इट लेटर. सो perfect. इट हैज बीन Perfect. ग्रेट. सेंड मी It's योर been मीडियम amazing. लिंक ऑन व्हाट्सएप, तो वो भी Sure. मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ. Sure. एंड One last थैंक thing before we depart. या श्योर श्योर Yeah, श्योर. I was just wanting just last piece of advice for everyone that's watching. कि यही बात है कि don't underestimate yourself. All of us have like the imposter syndrome. I believe that I wasn't good. I wasn't cut out to be here in the US, study here with like professors that are really popular in my space. But it's really really important to trust in yourself. अगर आपको interest है UX design में, आप 10 class के बच्चे हो, आप 5-6 class के बच्चे हो, you don't have an undergraduate degree, just go for it. Just understand everything. Talk to me, talk to other professionals in the field, talk to Shayar bhai about if you're interested in Not social me, media. but yeah, I can connect with them. I can connect them with other people. Yeah. Just talk to people. Just don't underestimate yourself, and you will just do stuff that is like
beyond what you imagined yourself to be cut out to do. Yeah. That So is yeah, that is truly good, yeah. That it has been great, yeah. thank Thank you you so so much for much. having me. Thank Thank you you, so much for thank having you, me. and send me the link. And let's For do sure. this some other time. एक बारी Definitely, एक definitely, NFT specific space रखते हैं किसी दिन. definitely. And This it was a has really been nice great. conversation. Yeah. Yeah. And enjoy the rest of your Sunday. You too. Chai बनाएं आप, and I'm do something else as well. Perfect. Perfect. Thank you. Thank you so Perfect. much. Thank you Thank you so so much. much, Have Ali. a nice one. You too. Good Allah night. Bye. Hafiz. Allah Love is. Hafiz. Bye.